Okay, so the question says write IUPAC name of the following complex CrNH3 whole 3 Cl3. Okay, so CrNH3 whole 3 Cl3, the charge on the complex, the coordination pair is 0. Okay, so first we will write the ligand name in the order of alphabetical order. So triamine, we will write chlorido because charge of chlorine is, because ligand is anion because ligand is anionic ligand, because this is an anionic ligand. And we will write chromium, and we will not put any we will not put 8 because the charge of the coordination pair is because charge of the coordination pair is 0 and it's not negative. Then we will write the Roman numeral of, so now we will find the oxidation state. Then we will write Roman numeral of central metal atom, which is chromium. Okay, so let's take X. Okay, so why are we finding the oxidation number of this metal? Don't we know it? Because this is transition metal, that's why we are finding the oxidation number of this metal. This chromium is of 3D series and we don't know its specific oxidation number, so we're finding it. It can be many. There can be many oxidation state of chromium. Okay, now let's move on to the question. So this is neutral ligand, so this will be 0. Then we have -3. Total charge is 0 on the coordination pair, so x equal to 3. So we'll write here 3. Here we will write here. Which will write here, not here, but I had no space, that's why I wrote it there. Okay, so I wrote something wrong here. This should be tri, not try. Okay, then we will write the coordinate. Write the IUPAC name of this complex: CONH3 whole 5 CO, and then we have, so this complex CONH3 whole 5. Then we will write CO3 and Cl. So this is the coordination compound CONH3 whole 5 CO3 Cl. Okay, so if I will tell you, let's write the name here. Okay, so which is negative, which is positive? This is negative, which is positive, because chlorine is obviously negative charge and this pair is positive charge. So this pair is positive charge. Then we will write the positive part of the first should be followed by the negative part. So let's write the name of it. So first we will write the ligand name, and then we will write write it alphabetically. So if I will tell you which one comes first, amine will come first. Amine is amine means this amine would be this name. Amine will be neutral ligand, and it's also an exception of the 4 where the normal name is not written. Exception of the 4 neutral ligands where normal name is not written. Means basically neutral ligand we write normal name, but there is an exception of 4, and NH3 also comes in those exception. Okay, so the neutral charge is 0. So let's find the oxidation number of CO first. X0. CO3 is obviously a CO3 is a anionic ligand, I guess. So yes, CO3 is an anionic ligand having charge of -2, and then we have chlorine having charge of -1. Okay, yes, so or else we will not write chlorine, we will write this is basically the charge of whole coordination sphere, and it is +1. Okay, means basically the charge of whole coordination sphere is what? X, then this is 0, this is -2 is whole, the charge of it is +1, so total charge is equal to +1, and we will write the charge of X is 3, so this is 3. So let's write the name here. Name would be what? So the name would be penta amine so A alphabetically A comes first relative to CO3 or carbonato. So then we will write
So does we have to give space or not? Just a second. So yeah, you don't need to give any space between any of the name. Okay. So this food was I actually written wrong. Means it's not wrong, but let's write perfectly. Penta, amine, and carbo. So means this will be not capital. This would be small only. Carbo. Then it would be carbonato. Uh, because O is attached to an another ligand ends with O, so that's why carbonato, not carbonate. Instead of carbonate, we wrote carbonato. Then we will write. Then we would write carbonato. Then we will write pentaamine carbonato cobalt, and we will write only cobalt. Because why only cobalt? Because the sphere charge is positive, so we will not write any. We will not put 8. So the name will not end with 8. Then we have after cobalt, then we have the -1, which is chlorine. So then we will write the name of this. Then we will put the charge in Roman numeral, which is 3 in bracket. Then we will write chloride. Okay, this is the name. So this is the name, IBU's name. Now another question is, write down IUPAC name of the following complex. CrNH3 whole 2 Cl2 En bracket Cl. En is ethylene diamine. Okay. So next question is CrNH3 whole 2 Cl2 En Cl. Okay. So this is ethylene diamine. So let's just write the formula on the copy. Now as we can see, this is positive terminal. This is positive charge, this is negative charge. So first we will write the positive part followed by negative part. In this we will just first write the ligand alphabetically. So amine would come first. So let's first find the charge of the transition metal. What would be the charge of transition metal? X minus, this is neutral, and this is -2. The En is also En is a ethylene diamine. Okay, so ethylene diamine is a what? Just a second. So ethylene diamine is a neutral ligand, which is not the exception of that 4, which doesn't belongs to exception of the 4 elements, which were 4 compounds which didn't have normal name. Means basically En has a normal name, ethylene diamine. You will put basically neutral ligand has normal name except for, so that doesn't belong to except 4 group. Means doesn't belong to that 4 group. Okay, 4 compounds. So this we will write normal name here, but charge on it is 0. So the charge here on the sphere is 1. So x is equal to 3. Okay. So after this we will start with writing the positive sphere coordination sphere. Then we will first write the ligand alphabetically. First we have diamine. Okay, so if you just start a compound, then we will write it with capital. Then we have diamine, AMMINE. Then we have diamine, then we have dichlorido. Then C comes, and actually no, and it right. A, then C, then A, B, C, D, E. E will come. This ethylene
ethylene diamine. Okay, and then will have at last ethylene diamine, and we'll have chromium. Actually, you should write it in ones. Okay, you should write it in ones, but there is no space. So okay, then we'll write. It would be better, I think. Then we'll write chromium. Chromium. Chromium would be written in normal num because this is not negative charge. If it had negative charge, this sphere had negative charge, then it would be. And we have written chromate. But now we write chromium. Then charge of the chromium would be what? 3. So Roman numeral 3. Then at last chlorine. Okay, so this is the IPC name. One mistake means also I forgot to tell you that ethylene diamine would be in bracket because it's a complex bidentate ligand and it's complex compound. That's why it would be ethylene diamine would be in bracket. Also, you could write it as ethane 1,2 diamine. That's also right. Ethane 1. It is ethane dash 1 comma 2 dash diamine. You can also write it like that, but this is also right. Then we have chromium, and then we have 3 diamine, chlorine, ethane diamine. Then we have chromium 3. Then we have what? Then we have chlorine. This is not chlorine, this would be chloride because if you just write NaCl, if you just write NaCl, then this is plus, this is minus. Similarly, this is plus, this is minus. So we will write sodium chloride, not sodium chlorine. So this would be sodium chloride. Sorry for the mistake. Okay, sodium chloride. CHLORI. CHLORID. Okay. Then after this we will write. Okay, after this. Okay, so let's do next question. Write the formula for the following complex: pentaamine nitrito O cobalt 3. Okay, so now let's start now doing from the start. चलिए यहाँ से करते हैं चलिए. So let's start. The formula of the coordination compound tetraamine. Okay, the formula of the coordination compound tetraamine chlorido and cobalt 3 chloride is. So what would be the formula of this compound? So if you will look at this name, so first we will see that first we will start with the positive part. Tetraamine chlorido nitrodo and cobalt 3. So this name must be the positive. This name must have the positive part. So this must be the positive part followed by negative part, which is chloride. So first we will start making the. Okay, so also you must remember that while forming the compound, we will always start with the positive part at first, then we will write the negative part afterwards. So the positive part is tetraamine. Okay, so first tetraamine, this is NH3 whole 4. Then we have chlorido. This is chlorido because this has a negative charge. That's why O has been attached to the end of the anionic ligand. And tetraamine is basically an neutral ligand of the 4 exception family. Okay, so tetraamine, chlorido, then we have nitrodo. Okay, so basically
tetraamine. So first we will write the compound. Okay. So basically tetraamine would be here. Then we will write chlorido. Chlorido would be written here. Chlorido means anion. That's why. Then we have nitro N cobalt. Okay. So nitro to N. Nitro to N is basically. Now what will so nitrito N, it's basically an ambidendant ligand. Nitrito N would be ONO. Okay, and this thing is anionic ligand. So nitrito N would be anionic ligand ONO. Then we have cobalt 3. So cobalt would be written here. This first central metal ion, then bracket, then you write chloride Cl2. Okay, so A would be the answer. 15A. Let's check it out. So no, okay. I'm extremely sorry. Nitrito N. Nitrito N would be NO2, and that's also an anionic ligand. Nitrito N. Okay. Nitrito N is also an anionic ligand, and this would be NO2, not ONO. So NO2 and means we will replace ONO with NO2. Okay, so because nitrito N is written on nitrito O. So nitrito N and nitrito O are basically ambidendant ligands, which we will study in the which we have studied in linkage isomerism, nitrito O and nitrito N. You don't need to discuss about that, but let's see next. After that, so CnHO4, this would be the answer. Okay, and yes, this is also wrong. Cl2 would not be chloride. It would be Cl2 would be chlor. Okay, after this, chloride would be Cl. Okay, so Cl and NO2 would be not be, it would not be on, it wouldn't be NONO, it would be NO2. Then we have Cl and we have NaCO and CO. Okay, so option would be C. 15C. Let's check it out. Yes, 15C is the answer. Next question. Let's move on to next question. Write the formula of the following coordination compound: iron 3 hexacyanide 2. Okay, so write down the formula for the following. So let's write the formula for it. So first of all, iron 3. So important thing here is iron 3 is written. So first this would be okay. So that's second. Let's say iron 3 hexacyanide. Iron 3. Just a second. Iron 3. Okay, how could you write iron 3? And how is it 2? Ferret 2. Okay, it's actually wrong because iron 3 here prefixes are not used. Okay, I have a doubt in it. You may check some other video solution on YouTube by scanning this thing. Okay, I think this would be this. I will write here as a doubt. We'll check it later because we know that counter n doesn't have numeric prefix. My English is not right now because I'm doing chemistry, not English. Means because counter n doesn't have numeric prefix in, okay, that's correct English, in the nomenclature name. Nomenclature. Okay, so let's move right here now. Iron hexacyanide of ferret. Okay, so what we'll do here is first we'll write iron, then 3 plus charge here. Okay, now in the now hexacyanido. Okay, hexacyanido would be written here. Let's say hexacyanido. Then ferret, iron, and this would be 2. Okay, 2 plus, this would be minus 6. Okay, just a second again.
ferret hexacinido. Okay, I have wrong, then did it wrong, yes. Just a second. Actually, I have a doubt in this question. You may check some other video creator on this question. Just scan this thing on Google Scanner and paste it on YouTube. You will get that question. Okay. So I have doubt in this question. We have done this question right now and done this question also. Let's move to 19th question. 19th question says when coordination compound this is mixed with Ag. Okay, let's do this later on because this is a little bit on tougher side. Give formula of the following compounds: potassium tetra hydroxyzincate. Means I want to make it from easy to difficult level. That's why potassium tetra hydroxyzincate 2. Okay, so potassium is written first, so this would be what? This would be your basically positive part is written first, so this would be name would be like this: potassium, then we have tetrahydroxo, so then we will just cover it. Then this means this would be first written cation. We will write cation first, so that's why we written cation first. First part is name first, followed by negative part. Then we will write the negative part starting with ligand, the alphabetically in alphabetical order. So first we have tetrahydroxo, the hydroxydozincate. Okay, tetrahydrox. So we will leave space for central metal atom first. Then we will write OH minus. This is OH minus is known as hydroxydo. Okay, and tetra is there, so 4, and hydroxido, and then we have zincate is here. Okay, attached here. And if you want to check charge, you can also check. This is 2 plus, this is -4 -2, this would be 2. Okay, this will be 2. Okay, this will be 2 because of the balancing of charge. Okay, let's check the answer now. 20, if you will see, K2ZnOH4. Okay, so we have got K2ZnOH4. So basically answer would also be this much. Means we have to also check the charge. Okay, after this B1, let's do hexaamine platinum 4 chloride. Okay. Okay, so hexaamine platinum 4 chloride. So hexaamine platinum 4 chloride. So first we will okay, so if we will just see this thing whole hexaamine platinum 4, this whole thing is the positive part and this thing is the negative part. So let's write the positive part first. So hexaamine, so this is the ligand, obviously platinum. Let's write platinum, and it has a charge of 4. So just remember this has a charge of +4. And after that we have hexaamine, and hexaamine is amine is written, this is neutral ligand and this is hexa, and we have done a chloride. So let's see the charge of the coordination pair. Charge of the coordination pair would be what? 4. It would be 4, and so this would be 4. Okay, because 4 minus 4 plus would be neutral. So let's check the answer. 20B. Just a second. 20B. So you can see it's we have done it correctly. PT NH3 whole 6. PT NH3 whole 6 whole Cl4. Okay, this is right. So this thing we have done it correctly. Then let's move on to using IPC norms. Write the formula for the following. So pentaamine nitroto O cobalt 3. So basically this whole thing is the coordination pair which has a charge of positive. Okay, so let's write it.
let's write the coordination sphere. So first let's write penta. No, sorry. So first let's write the cobalt tree. Cobalt tree is what? Cobalt. We will first write the central metal atom, central metal ion or atom. So it's cobalt. Then we will write nitro to O. Nitro to O is basically amine ligand and it's ONO. So ONO, let's write ONO here. ONO. Okay, ONO. And this would be minus charge. So this is anionic ligand. Nitro to O. We can just write. Means I think better thing would be let's write first pentamine because it's written first alphabetically. Pentamine is written first. That's why let's write pentamine first. So penta NH3 whole 5. Pentamine is neutral ligand and its formula is NH3 and pentamine and it's all it comes in exception of 4 except the 4 exception of it comes in exception of 4 neutral ligands which doesn't have normal name. So pentamine, let's move on. Pentamine nitroto would be ONO and it has nitroto O. Then this thing and we'll add chlorine here, but it's not over yet. We will write here so basically so let's see the charge of chloride here means basically the charge of the whole coordination sphere. So pentamine means what? Pentamine means it has a 0 because it's a neutral ligand. Then we have 3 charge, 3 plus 0. Cobalt has it is given 3. Then pentamine nitroto has minus 1 charge. So basically it has 2 charge. So this is 2. Okay. So 21. Let's check the answer. 21. 1 is what? 21, as you can see, it's the same. CuNH3 whole 5 ONO bracket Cl2. So okay. So basically 2. So this the answer is right. You can just check the answer. It's same. CuNH3 whole 5 ONO Cl2. Now let's move on to next question. This we have done this 21. 1 and 21. 2. Potassium tetracyanide nickelate 2. Okay, potassium tetracyanide nickelate 2 would be what? So potassium is the positive terminal, positive part. So potassium, and then we have tetracyanide. Tetracyanide means what? Tetracyanide nickelate has a charge of 2 and because just a second. Why nickelate is being used? Because the charge of the central metal atom, central coordination sphere is negative. That's why nickelate is being used. If the central metal, so basically, if the charge of the sphere is negative, the name of the central metal atom ends with 8. If the charge of the sphere is 0 or positive, normal name is written. At last, the oxidation number of the central metal atom written in the numeral. Okay. So now after this, what we'll do is potassium, we wrote it. Then we will write tetracyanide cyanide is Cn and tetra is 4 and cyanide is obviously anionic ligand and nickelate is, as we know, central metal atom and it is written as 8 because it is in a negative coordination sphere. Let's move on. Okay, so let's move on here. So 2 minus 4 would be minus 2 charge. Minus 2, so this would be 2. Okay, to balance out the minus 2 charge, 2d plus 2. It will be 8. So let's check the answer. 21. K2NiCN4. So answer is right. So after this, let's move on to the next question, which is 22. 22 question says as that write using IUPAC norms, write the formula for the following sodium dicyanidoorate 1. So this is a good name. Okay, that's new name. So let's start with sodium. Sodium is written first, so that would be obviously the positive part of the coordination compound. So sodium, let's write the sodium first. After that, we will write
Aurate. Let's write the aurate now. Okay, you may not know, but the thing is that aurate. Where is aurate? So aurate is basically gold. As this thing put as your sodium is positive part and dicyanidoorate is the negative part, or a negative part is basically what coordination pair. So if coordination pair is negatively named of the metal atom and fit 8, so this is written as aurate, because I don't think goldate could be written, so it's written with aurate, so it's written audit. Okay, so now, okay, so audit is written. Audit is basically gold with 8. It is written as 8 uh, because the coordination pair has a negative charge. Okay, so now let's move on. Na, then we will write the coordination pair, then we will write the aurate, then we will write means gold, then we will write dicyano means Cn, then we will write 2, sorry, Cn, then we will write 2 because dicyanido is written here. Dicyanido is written. Sorry, means where is it written? Yes, this is dicyanido is written. So dicyanido aurate, and this is the sphere, and this has a charge of 1, and dicyanido has charge of -2. So total it has -1 charge. So this is the structure of the coordination compound. 22, let's check the answer. 22A. 22 is NaAU CN2. NaAU CN2. So it's right. It would be correct. Sodium dicyanido aurate 1. Then, what the heck is it is written? Okay. So this we have done. Then we have to write. And then you write tetra amine chlorido nitrito and platinum 4 sulfate. So basically this tetraamine chlorido and platinum 4 is the positive part. So let's write it means basically it's coordination pair. So also you can just also assume that the how okay also you can मतलब हमें और एक चीज़ से भी पता चल जाएगा कि आपका जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो आपका पॉजिटिव चार्ज है कैसे, क्योंकि यहाँ पे प्लैटिनम 4 है, आप देख सकते हैं नहीं तो प्लैटी और कुछ होता 8 लग जाता है प्लैटिनम में, लेकिन यहाँ पे प्लैटिनम 4 है, मीन्स देयर इज प्लैटिनम 4 हियर and it's not 8. By that we could know that this coordination compound this coordination sphere is your has a charge of positive, because if the sphere charge is 0 or positive, normal name is written, central atom normal name is written. Okay, so platinum 4, if the charge of the sphere is negative, the name of the central atom and ends with 8, and if the okay now let's move on to next let's do it fast, I'm doing it late. Okay, let's move on. Tetraamine would be written outside, sorry inside only. So let's write the platinum, it has a charge of 4, then we will write N. Okay, so nitrito N is basically NO. So first let's start from the let's write alphabetically. Okay, so tetraamine means NH3 whole 4, it has a charge of 0. Tetra is written, so 4 would be the this thing would be 4. Okay, so then chlorido, and we'll let chlorido is basically Cl. Then we have nitrito N is basically NO2. This thing will just mix up the charge, this is -2, and then nitrito N. Okay, after that we have platinum is done,
Then you have sulfate. Sulfate is SO4. Now let's see the charge. It's 2, so it should be 1 only, because sulfate has charge of -2. So let's move on to the next question. Now we have done this thing. So this thing is done. Now let's move on to next question. Tris ethane 1,2-diamine chromium trichloride. Okay, so this coordination sphere has a charge of positive, so let's write the coordination sphere. Also you can see it's written as this is chromium, it's not chromate, so that's why this thing has positive charge, and not means positive or neutral charge, you can know by that. मीन्स अगर क्रोमियम है तो आप पता कर सकते हो, मतलब 8 अगर नहीं है तो आप जान सकते हो कि वो न्यूट्रल है या पॉजिटिव चार्ज है किसका, स्फीयर का। और क्लोराइड है तो नेगेटिव ही होगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो पहले है ट्रिस, पहले है क्रोमियम लिख देते हैं Cr, और उसका चार्ज है 3, फिर ब्रैकेट कर दो। उसके बाद लिख दो ट्रिस इथेन 1,2-डायमीन। ट्रिस इथेन 1,2-डायमीन बेसिकली EN को डिनोट करता है, इथेन या मतलब बेसिकली उसका नाम क्या है, उसका नाम है इथिलीन डायमीन। तो बेसिकली ट्रिस है तो 4 है, EN4। उसके बाद कुछ नहीं, ख़त्म। फिर क्लोरीन है तो ये 3 है। ये आपका EN का चार्ज कितना है भाई, EN का जो न्यूट्रल है तो 0 हो जाएगा, तो अब ये 3 है तो ये -3 हो जाएगा। क्या -3 हो जाएगा भाई, एक सेकंड, तो ये -3 है क्लोरीन का चार्ज, और ये +3 हो गया। तो इसके बाद चेक कर लूँ एक बार, ये एक चीज़ गलत हो गया, ये ट्रिस बोला था हमने, टेट्रा सोच लिया, टेट्रा नहीं सोचा, मतलब ट्रिस लिखा तो 3 होगा, गलती से हो गया, सॉरी माफ़ कर दीजिए। सॉरी, वी विल ऑल्सो राइट हियर 3 बिकॉज -3 चार्ज हो, ये 3 चार्ज हो गया ना, ये 3 हो गया, ये तो 0 है, न्यूट्रल है, न्यूट्रल लिगेंड है, जो कि एक्सेप्शन में नहीं आता, मतलब एक्सेप्ट फॉर हमने लिखा था उसमें नहीं आता, मतलब आप समझ गए, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो उसमें नहीं आता ये, मतलब वो कॉमन नाम होता है, वो एक्सेप्शन में नहीं आता, ठीक है। जल्दी करता हूँ, तो ये 3 है तो ये 3 हो जाएगा, और क्या। ओके, इसके बाद ये खत्म हुआ, तो ये ख़त्म हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं, पोटेशियम टेट्रा हाइड्रोक्स जो भी है। तो पहले तो टेट्रा हाइड्रोक्स, ठीक है, जिंकेट लिखा है, जिंकेट। तो देखिए आप देख सकते हैं 8 आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज ही होगा, आपको पता चल गया। और फिर पोटेशियम है तो नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, ये नेगेटिव चार्ज होगा ही क्या, मतलब जानने की जरूरत है नहीं वैसे। तो पहले ठीक है, चलिए जिंकेट देखते हैं, जिंक हो गया। उसके बाद टेट्रा हाइड्रोक्सी को हम पहले प्रेफरेंस देंगे क्योंकि वो आगे आ रहे हैं ना, क्योंकि टेट्रा H पहला आ रहा है, फिर उसके बाद ऑक्सो जो भी है, हाइड्रोक्सो क्या होता है, चलिए देखते हैं। एक सेकेंड, टेट्रा हाइड्रोक्सीडो लिखा है क्या, टेट्रा हाइड्रोक्सो लिखा है। हाइड्रोक्सो कहाँ पे आता है, आप देखिए थोड़ा, हाइड्रोक्सो कहाँ पे आता है, कहाँ पे आता है, बोलिए जल्दी। हाइड्रोक्सो, एक सेकेंड में देखता हूँ। ओके, तो ये गलत लिखा था, ये हाइड्रोक्सीडो होगा, हाइड्रोक्सो नहीं होगा। तो अभी जल्दी करते हैं, तो क्या होगा, टेट्रा अमीन क्लोरिडो नाइट्रेट। ओके, तो कहाँ गया, हाँ, तो अभी हम थे जिंक में। उसके बाद हम लिख रहे थे, देखिए टेट्रा हाइड्रोक्सीडो। हाइड्रोक्सीडो क्या होता है, हाइड्रोक्सीडो होता है OH- टेट्रा डी, तो 4 हो गया। उसके बाद हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, और यहाँ पे फिर पोटेशियम आ जाएगा, पोटेशियम आगे रहेगा, ठीक है। फिर आपका जिंक का चार्ज 2 है, और आपका OH- का ऑब्वियसली -4 हो जाएगा, -4 2 -4 -2, तो ये +2, तो ये 2 हो जाएगा, K2 आंसर ये हो जाएगा, K2 तो हो जाएगा आंसर, क्या आंसर हो जाएगा, K2 जिंक Zn आ जाएगा ZnOH4 और ब्रैकेट में K2, ठीक है। तो ये माइनस में लिखिएगा। उसके बाद क्या करना है, ये हो गया। उसके बाद 24 का है पोटेशियम टाई
ऑक्सालेटो एल्यूमिनियम, ठीक है। तो पहले तो एल्यूमिनेट, तो नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, नेगेटिव चार्ज या फिर न्यूट्रल भी हो सकता है, वैसे नहीं नेगेटिव चार्ज ही होगा, नहीं 8 अगर आएगा तो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा कोऑर्डिनेशन पेयर का, जो भी हो जाए नेगेटिव होगा ही होगा, ठीक है। 8 अगर आ जाएगा तो वो नेगेटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा, एंड स्वीट 8, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा ही होगा। तो पहले तो एल्यूमिनियम 8 लिखा है, पहले क्या लिखा है एल्यूमिनेट लिखा है, तो पहले एल्यूमिनियम लिख देंगे, एल्यूमिनियम ये आपका नेगेटिव चार्ज है, तो पहले लास्ट यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद यह है एल्यूमिनियम के पीछे पहले ट्राई ऑक्सालेटो, फिर से अगर लिख दिया इसने, नहीं सही लिखा है शायद इस बार, ट्राई ऑक्सालेटो, हाँ ये सही लिखा है, तो वो हो जाएगा C2O4, और इसके बाद ये हो जाएगा ट्राई लिखा है ना इसने, हाँ तो इसने क्या ट्राई, तो 3 हो जाएगा, और ये आपका हो गया क्या ट्राई ऑक्सालेटो एल्यूमिनेट, फिर उसके बाद पोटेशियम यहाँ पे आ जाएगा, फिर देखते हैं कितना हो रहा है, इसका 3 है, फिर C2O4 का आपको अगर पता होगा तो 2 होता है, -6 होता है, तो -2 चार्ज होता है, तो -3 -6 -3 तो ये 3 हो जाएगा प्लस न्यूट्रल करने के लिए, तो सही है, यही होगा, तो ये सही है। इसके बाद देखते हैं डाई, फिर क्या लिखा है डाईक्लोरोबिस इथेन, जो भी है ये आपका इथिलीन डायमीन है, लेकिन इसने लिखा है इथेन -1,2 डायामीन, तो उसके बाद कोबाल्ट 3 दिया है, तो अभी क्या करेंगे हम, पहले तो कोबाल्ट लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं लिखा, कोबाल्ट लिखा है, तो ये आपका ओके, तो मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं सही है, तो ये कोबाल्ट लिखा है, तो ये आपका न्यूट्रल हो सकता है या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉजिटिव चार्ज है या फिर 0 इफ द चार्ज ऑफ दिस पेयर इज 0 और पॉजिटिव चार्ज, नॉर्मल नेम इज रिटन, सो नॉर्मल नेम होगा, सो जल्दी करते हैं कोबाल्ट, उसके बाद कोबाल्ट आ जाएगा यहाँ पे, फिर उसके बाद डाईक्लोरिडो लिखते हैं हम अभी के अभी, सो Cl2 क्लोरिडो, हाँ क्लोरिडो, उसके बाद है बिस मतलब दो, फिर से इथेन, तो En2 हो जाएगा, इथेन है, उसके बाद एक में इथेन में फर्स्ट कार्बन में और सेकंड कार्बन में दोनों में अमीन आ जा रहा है, ओह कैसा है क्या, वो En का मतलब होता है बेसिकली क्या होता है बेसिकली C, फिर और एक C, फिर 1,2 डाई अमीन NH3, फिर NH3, उसके बाद 1,2 डाई अमीन, यहाँ पे और एच आ जाएंगे वैलेंसी चार करने के लिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये बंद करो, ख़त्म, और नहीं करना कुछ, ठीक है। तो न्यूट्रल होगा, और क्या न्यूट्रल होगा, आप चेक करना है तो कर सकते हो, 3 -2 -4, अरे यार गलत हो जाएगा, नहीं -2 हो जाएगा ना, क्या कर रहे हैं, लेकिन भी -4 हो जाएगा, एक सेकेंड रुकिए, डाईक्लोरिडो लिखा है, नेगेटिव चार्ज होगा, नहीं नेगेटिव चार्ज कैसे हो सकता है सॉरी गलती से मिस्टेक हो गया, ये En आपका 0 होगा, न्यूट्रल लिगेंड है ना ये En, इथिलीन डायमीन, या फिर आप बोल सकते हैं इथाइल 1,2 डायामीन, जो आप बोल सकते हैं इथेन 1,2 डायामीन, जो भी है वो मतलब बोल सकते हैं इथेन, आप लिख सकते हैं इथेन 1,2, फिर ब्रैकेट मीन सॉरी गलत हो गया, फिर लिख सकते हैं इथेन 1,2, फिर कमा लिख सकते हैं आप डायमीन, मतलब लिखना ही है, लिख सकते हैं क्या, और एक बार लिखते हैं इथेन 1,2, मीन जो इसका तो चार्ज 0 है, न्यूट्रल लिगेंड है ना, तो 0 होगा ही नहीं तो इसका प्लस चार्ज आ जाएगा, माफ़ करिए, तो प्लस चार्ज अगर आ जाएगा तो हम नॉर्मली क्या लिखेंगे, कोबाल्ट लिख देंगे, कोबाल्ट लिखेंगे, तो यहाँ पे प्लस चार्ज आपको देना है, नहीं तो गलत है, समझिए आप, ठीक है। इसके बाद बी वाला हो गया, अभी चलिए
करते हैं ये वाला 25 का डो करते हैं, जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं। राइट फॉर्मूला ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। तो क्या कॉम्प्लेक्स का लिखा है पेंटा अमीनेट टेट्रो जो भी है। तो कोबाल्टीन है, पहले कोबाल्टीन लिख रहे थे। कोबाल्ट देखिए पॉजिटिव चार्ज होगा न्यूट्रल होगा, क्योंकि कोबाल्टेट नहीं लिखा। तो कोबाल्ट पहले लिख देते हैं CO। उसके बाद लिख देंगे हम पेंटामीन। पेंटामीन लिख देते हैं, जो कि होता है आपका न्यूट्रल लिगेंड, और ये आपका एक्सेप्शन में आता है कॉमन नेम्स वाले का। और यहाँ पे पेंटामीन है, और उसके बाद नाइट्रिटो O है। नाइट्रिटो O अगर है तो क्या हो जाएगा, ONO हो जाएगा। ONO से चार्ज तो -1 होता है, आपको पता ही होगा। आप तो मान हैं, चालाक हैं, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इसके बाद नाइट्रिटो होता है। उसके बाद नाइट्रिटो O मतलब ना, नाइट्रिटो O मतलब होता है ONO ना। उसके बाद ब्रैकेट दे सकते हैं। उसके बाद कहाँ गया, सॉरी। उसके बाद है नाइट्रिटो, फिर कोबाल्ट ले लिया है। उसके बाद हमें ये एक दिखाना है, और कुछ दिया नहीं है काउंटर। तो अभी देख सकते हैं आप, ये अगर चेक करेंगे आप, तो मैंने जो बोला था ये न्यूट्रल होगा या फिर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। इसका चार्ज भी लिखना है ना, तो अभी चेक लिखना, चार्ज निकालना पड़ेगा। 3 और ये 0 होता है, ये होगा -1। तो अब 2 ++ 2 लिख दीजिए। +2 2 प्लस लिखिए या फिर +2 लिखिए, आपकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी। मतलब 2+ लिखना बेटर नहीं, आपकी इच्छा। तो CONH3 होल 5 0 CONH3 होल 5 ONO ब्रैकेट 2+, सही है, चेक कर रहा था मैं। तो उसके बाद ये सही है। उसके बाद देखते हैं नया वाला, नेक्स्ट क्वेश्चन 26 का 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कह रहा है, हेक्सामीन कोबाल्ट 3 क्लोराइड। तो हेक्सामीन मतलब, तो देखिए पहले तो हम लिखेंगे हेक्सामीन। तो ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, क्योंकि क्लोराइड है नेगेटिव चार्ज, और कोबाल्ट लिखा है तो क्लोराइड भी है। पहले देखिए यहाँ पे हेक्सामीन कोबाल्ट, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्टेट नहीं है, तो आपको पता चल गया न्यूट्रल होगा या फिर पॉजिटिव चार्ज होगा। फिर उसके बाद आपको पता चल गया क्लोराइड है। क्लोराइड है तो टप तो डेफिनेटली पॉजिटिव होगा। तो लिख देते हैं कोबाल्ट। उसके बाद लिख देंगे हम हेक्सामीन। हेक्सामीन क्या होता है, NH3 न्यूट्रल लिगेंड होता है हेक्सामीन। उसके बाद क्या लिखा है, लिखेंगे कुछ नहीं, यही होगा, ब्रैकेट दे देते हैं, फिर क्लोरीन लिख देते हैं। फिर इसका चार्ज है 3। किसका चार्ज बोल रहा हूँ मैं, कोबाल्ट का, जो कि है ट्रांजिशन मेटल। इसका 0 है, तो इसका 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यही होगा, चेक कर लेता हूँ एक बार। 26 का 1 CONH3 होल 6 ब्रैकेट में CL3, सही है। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोटेशियम टेट्राक्लोराइड निकलेट 2। तो पहले क्या करेंगे, निकलेट लिख देते हैं। निकलेट 2 है, निकलेट देखिए नेगेटिव चार्ज आएगा ही आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकलेट दिया तो नेगेटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव आएगा ही आएगा। फिर क्या लिखा है, पोटेशियम तो पॉजिटिव चार्ज है भी, तो मतलब डेफिनेट हो गया। देखिए 8 से पता चल जा रहा है कि ये नेगेटिव चार्ज होगा ही, मतलब कंडीशंस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो अभी क्या टेट्राक्लोराइड बोला है, नहीं बोले, तो टेट्राक्लोराइड फिर लिख देते हैं क्लोरिडो CL4। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे लिख देंगे क्या, काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या है, पोटेशियम है। पोटेशियम का नहीं पता कितना होगा ये, ऐसे चार्ज जान लेते हैं तो हो जाएगा, पता चल जाएगा। तो इसका चार्ज क्या होगा निकल का, निकल का दिया है क्वेश्चन में 2 है। उसके बाद -4 दिया है, तो -2 हो जाएगा। -2 अगर होगा -2 अगर होगा तो ये +2 हो जाएगा, तो मतलब ये 2 हो जाएगा। +2 तो नहीं हो पाएगा, कि 2 होना पड़ेगा +2 के लिए। तो उसके बाद 26 का 2 चेक कर लेता हूँ एक बार। 26 का 2 चेक कर लेता हूँ एक बार, K2 सही है, Ni सही है, Cl4 सही है, ब्रैकेट सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए, ट्राई करने तो कर लीजिए। राइट डाउन द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स CrEn होल 3 Cl3। और इसका निकालना है, लिखना है IUPAC नेम। तो रूल्स तो होता है कुछ कुछ चीज़ें। तो पहले तो आपको पॉजिटिव पोर्शन लिखना है। तो उसमें भी आ जाता है कि पहले हम हम लिख देते हैं इथेन। चलिए लिख देता हूँ आपके लिए, पहले इथेन लिखना पड़ेगा, नहीं पहले आपको सॉरी ट्राई लिखना पड़ेगा। ट्राई नहीं, इसमें आपका इथेन आ गया, तो इसलिए ट्रिस हो जाएगा, ट्रिस। ट्रिस ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिखना है, ब्रैकेट में लिखना है।
तो उसके बाद है इथेन, उसके बाद देंगे 1,2 डाई अमीन ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। उसके बाद लिख देंगे ये आपको पता चल गया होगा CrEn3, एक बार लिख ही देता हूँ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद लिख देंगे क्रोमियम। उसके बाद क्या होगा, क्रोमियम में चार्ज कितना होगा कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। ये तो 0 होता है, -3 है तो ये +3 हो जाएगा, तो 3 लिख देंगे रोमन न्यूमेरल में। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद क्या होगा, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था क्या, यही होगा, मतलब क्रोमियम रोमन न्यूमेरल में लिख देंगे, थोड़ा पास में लेता हूँ, यही होगा, आप चेक कर लीजिए भाई, इथेन 1,2 डायमीन क्रोमियम 3। उसके बाद क्या होगा उसके बाद क्लोराइड, ये लिखना है, क्लोराइड लिखेंगे या आप क्लोरीन लिखेंगे, तो ये क्लोराइड लिखेंगे, क्लोरीन नहीं लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे, सही है। तो क्लोराइड लिख दीजिए, क्लोराइड दिख रहा होगा आपको। तो चलिए चेक कर लेते हैं, मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए इसमें ना, इसमें लिखा है, देखिए इसमें लिखा है इथाइलिन डायामीन, तो वही चीज़ है मैंने जो बोला था आपको, इथाइलिन डायामीन, वो भी लिख सकते हैं, मतलब देखिए यहाँ से प्रूव हो गया, वो भी लिख सकते हैं, इथाइलिन डाय, स्पेलिंग कौन देखता है, तो वही है केमिस्ट्री में स्पेलिंग कौन देखता है, तो वही है कि वो लिख सकते हैं, ये प्रूफ हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो ये चीज़ सही है। उसके बाद देखते हैं 27 का 2 नंबर, राइट द फॉर्मूला फॉर दी फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट 3। तो यहाँ से हेंस लिख दूँ क्या, हेंस प्रूव्ड कि हम इथाइलिन डायमीन लिख स्पेलिंग, अरे यार स्पेलिंग कौन देखते हैं, सकते हैं, ठीक है, सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स पोटेशियम ट्राईऑक्सालेटोक्रोमेट 3। तो पहले तो हमें लिखना है क्या, पहले बोलिए क्या लिखना है, क्रोमेट, क्रोमेट है, देखिए क्रोमेट लिखा है, 8 आ गया है, क्रोमियम होना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, 8 आ गया। लेकिन यहाँ पे फिर से पढ़ लेता हूँ आपके लिए, इफ द नहीं पढ़ लेता हूँ, इफ द चार्ज ऑफ द, मैं क्वेश्चन रख देता हूँ, देखिए क्वेश्चन, इफ द चार्ज ऑफ द स्फीयर इज नेगेटिव द नेम ऑफ द इंटरमीडिएट एटम एंड्स विथ 8, इफ द चार्ज ऑफ द स्फीयर इज 0 और पॉजिटिव नॉन नेम इज रिटन एट लास्ट द ऑक्सीजन नंबर, ठीक है। तो बेसिकली क्रोमियम होना चाहिए लेकिन क्रोमेट हो गया है, तो इस तो क्या करेंगे हम, बोलिए आप तो क्रोमेट, तो स्टार्ट करते हैं क्रोमेट से। तो ये बेसिकली यहाँ पे कोई जगह छोड़ देंगे, ये क्योंकि नेगेटिव वाला पोर्शन होगा, नेगेटिव ही होगा क्योंकि 8 सिर्फ नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्फीयर के लिए लगता है। तो पहले क्या लिखेंगे, क्रोमेट, क्रोमेट कैसे लिखेंगे भाई, क्रोमेट बोलिए, क्रोमेट ऐसे होगा, क्रोमेट हो गया, काम खत्म क्रोमियम का। उसके बाद क्रोमेट के बाद क्या लिखेंगे, ट्राईऑक्सालेटो, ट्राईऑक्सालेटो कैसे लिखते हैं भाई, बोलिए ऑक्सालेटो बोला है, तो ये C2O4, ये रिपीटेशन हुआ है बहुत बार, अभी भी मतलब रिपीट हुआ है, C2O4, उसको क्या बोला है उसने, ट्राईऑक्सालेटो, तो 3 कर दीजिए, ट्राईऑक्सालेटो, ठीक है। ये बेसिकली C2O4 2 इसको हम लिखते हैं ऑक्सालेटो, यहाँ पे ट्राईऑक्सालेटो बोला है, तो 3 हो गया। उसके बाद आप बोलिए, ये 3 चार्ज है, ये आपका -2 चार्ज है, मैंने आपको जस्ट बोला ही था, -6 हो जाएगा, तो ये -3 हो जाएगा, तो -3 हो जाएगा, और लिखने की जरूरत है नहीं, तो मतलब लिखना नहीं है क्योंकि न्यूट्रल है ना, टोटल चार्ज, मतलब ये लिखना नहीं है क्योंकि न्यूट्रल ही होगा कंपाउंड बनने के बाद। तो इसके बाद काउंटर एन क्या होगा, बोलिए पोटेशियम हो जाएगा, लेकिन ये अभी -3 था, तो यहाँ पे +3 टाइम्स हो जाएगा, तो ये होगा आंसर। एक चीज़ है इसमें, यहाँ हम ना ऐसे C2O4 नहीं लिखते, मतलब लिख सकते हैं, कुछ मार्क शायद नहीं कटेगा, लेकिन लिख दीजिए OX में लिख दीजिए, आंसर तो OX में दिया है, तो OX में लिख दीजिए, इसे डिनोट करेक्ट किया जाता है, C2O4 को, C2O4 को डिनोट किया जाता है OX से, तो आप OX लिख दे के आ जाना, ठीक है, सही है।
तो ये हो गया कंपाउंड। ओके, ये ओवर सीखना है, ठीक है। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने बोला था लास्ट में देखेंगे। मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड CrCl3.6H2O इज मिक्सड विथ AgNO3 डॉट comma 2 moles of AgCl precipitated per mole of the compound at IUPAC name of the complex, ठीक है। तो हमें लिखना है, ठीक है भाई, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए कहाँ से, मुझे थोड़ा डाउट है। वैसे भी ये देखने की जरूरत है नहीं, ये आएगा भी नहीं क्योंकि एक ही बार आया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन देख लेंगे, राइट दी फार्मूला ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयरन 3। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है ना, आयरन 3 कभी होगा नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, गलती से लिखा होगा। लेकिन अच्छी बात है, लिख दिया है, नहीं नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। आयरन पहले तो देखिए यहाँ पे आयरन क्या होगा आयरन पहले लिखा है तो वो पॉजिटिव पार्ट हो जाएगा और ये नेगेटिव पार्ट होकर ही रहेगा। 8 भी लिखा है, आप देख सकते हैं। तो लिख देंगे फेरेट, लिख देंगे, तो फेरेट लिख देते हैं पहले, उसके पास लगा देंगे 8 में क्या हो जाएगा, ये 2 लिख देते हैं, 2 चार्ज है, मतलब चार्ज इसका ऑक्सीजन नंबर इसका। तो पहले तो जगह छोड़ते हैं जो काउंटर आयन के लिए। तो पहले Fe लिख दीजिए, फिर यहाँ पे कितना है, एक सेकेंड हाँ, यहाँ पे चार्ज 2 है, फिर उसके बाद साइनाइडो है CN हो जाएगा, हेक्सा साइनाइडो है तो 6 लगा दीजिए। तो 2 - 6 कितना होता है, -4 होता है। तो और फिर आयरन में कितना लगेगा फिर, तो फिर -4 अगर है और आयरन का चार्ज 3 दिया है तो फिर 2 माइनस ऑफ साइनाइडो तो -1 ही होता है, -6, और ये हो जाएगा फेरेट कितना होगा, 2 होगा, लिखा तो है 2। हेक्सा साइनाइडो कितना होगा, हेक्सा साइनाइडो तो होगा -1, -6 और 2 -4 अगर होगा तो फिर देखिए यहाँ पे क्या बेसिकली यहाँ पे कुछ थोड़ा टर्न ओवर करके बोला है, मतलब थोड़ा ट्विस्टेड है। आयरन 3, देखिए आयरन 3 बोला है, मतलब इसका 3 चार्ज होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा चार्ज। ये तो 3 कैसे होगा ना, क्योंकि इसके बाद अजीब सा क्वेश्चन है। थोड़ा देखिए ये क्वेश्चन, थोड़ा नेट से सर्च करके थोड़ा चेक कर लीजिए, एक बार आंसर देख लेते हैं इसका, थोड़ा सा अजीब से है। 16 नंबर, एक सेकेंड, 16 नंबर का कहाँ आएगा, नहीं वैसे ऐसा क्वेश्चन। Fe4 लिखा है। हाँ बेसिकली सही थोड़ा है, थोड़ा सा सही लगा है बेसिकली। देखिए मतलब बेसिकली इसका चार्ज टोटल तो कोऑर्डिनेशन स्पेयर का -4 हो जा रहा है और इसका दिया है 3, ठीक है ना। तो बेसिकली वो बोल रहा है अगर इसका चार्ज है 4, देखिए इसका अगर देखिए जैसे Al का चार्ज होता है 3 प्लस SO4 का होता है 2 माइनस। तो अगर हमें एक कंपाउंड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, Al2SO4 होल 3, मतलब बेसिकली क्या करना पड़ेगा, 2 माइनस को यहाँ पे लाना पड़ेगा, Al2 हो जाएगा, ये 3 को यहाँ पे लाना पड़ेगा, Al2SO4 होल 3 हो जाएगा। और कुछ करना पड़ेगा क्या हमें, और देखिए यहाँ पे ये 6 हो जा रहा है, यहाँ पे -2 × 3 -6 हो जा रहा है, -6, तो ये न्यूट्रल हो जा रहा है -6। वैसे ही यहाँ पे दिया है आयरन 3, आयरन का चार्ज है 3, और इस पूरे का जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज है -4 आ गया हमारे पास, सही है। इस पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज आएगा हमारे पास -4, जैसे यहाँ पे SO4 का चार्ज आया था -2, वैसे हमारे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर का चार्ज आएगा -4। तो अभी हम जैसे हम -2 को हमें एल्यूमिनियम के पास लाया था, वैसे ही हम -4 को हम आयरन के पास ला देंगे, तो ये 4 हो जाएगा। मैग्नीट्यूड लाएंगे, माइनस नहीं लाना है, माइनस लाएंगे तो होगा ही नहीं। माइनस कैसे हो सकता है, मतलब आयरन नेगेटिव कैसे हो सकता है, आयरन का नंबर नेगेटिव कैसे हो सकता है, आयरन का नंबर ऑफ मोल्स नेगेटिव कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। नंबर ऑफ मोल्स का भी नेगेटिव होता है क्या, तो देखिए तो यहाँ पे आ जाएगा 4, -4 था, इसका -4 था, यहाँ पे आ गया, और चार्ज फीट का 3 था ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे यहाँ पे 3 एल्यूमिनियम का होता है ऑक्सीडेशन नंबर 3, तो यहाँ पे आ गया, तो ये वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आंसर फाइनली ये आएगा Fe4। अच्छे से दिखा दूँ क्या, एक सेकेंड, कौन सा नंबर है, 16 नंबर है, 16 नहीं 19, सही, हाँ 16। तो देखिए आंसर आ जाएगा Fe4, हमारा भी Fe4 आया है। उसके बाद है FeCN, कहाँ गया हाँ, FeCN6, हमारे भी FeCN6 आया है।
होल होल कितना दिया हमारे पास, 3 है, यहाँ पे भी 3 है। तो ठीक है, थैंक यू।